गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जब हम भगवान का नाम कीर्तन कर रहे होते हैं उस समय भगवान क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं? नहीं, भगवान उस कीर्तन में आते हैं और वो देखते हैं कौन क्वालिटी चैंटिंग करता है, कौन सच में हृदय से भगवान को पुकार रहा है और कौन जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा है। Krishna is acknowledging if you are sincerely chanting with quality and calling out for help or you just doing a formality. ठीक है, इसके 5-10 मिनट हम लोग अच्छे से भगवान को सच में इस शुभ मास में, इस महीना, ये जो पुरुषोत्तम महीना है, ये भगवान का ही महीना है, ये कृष्ण का महीना है, इसलिए हम उनको बड़े सिंसियरिटी से प्रार्थना करते हुए अपने हृदय में बुलाएंगे, को पुकारेंगे। देखो सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना, हाँ, ये तो कॉमन फिनोमेना। वो प्रॉब्लम सॉल्व क्या होती है? जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तो एक द्वार खुला रहता है। कौन सा द्वार? हाँ, और भगवान और उसके नाम में सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ हाथ खड़े करना। कहाँ है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ इधर है। अरे सिद्धार्थ इधर है हमारे। Yeah, raise your hand. Where is Siddharth? If I call Siddharth, who's going to raise hands? One who has this name. जिसका नाम पुकारेंगे वही तो हाथ खड़ा करेगा। ऐसे ही अगर हम कृष्ण बुलाएंगे तो कौन सुनेगा? कृष्ण सुनेगा। दुर्योधन राम नहीं सुनेगा, कृष्ण ही सुनेगा।
इसलिए देखो, जब मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलूंगा, सब लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। जब मैं कहूंगा, आप मेरे पीछे गाना, जब हरे राम कहूंगा तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना। तो हरे कृष्णा पर जैसे द्रौपदी ने हाथ ऊपर किए थे, और हरे राम पर हाथ ऐसे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। सरेंडर किया, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। ताली क्यों बजा? सिग्निफिकेंस, एवरीथिंग हैज अ सिग्निफिकेंस। इसका भी कोई कारण है, होते ना। जब कोई परेशान होता है तो पंडित जी हाथ देके बताना कि हाथ में लाइन है ना, ये भाग्य है। और भगवान के कीर्तन में बड़े बड़े भाग्य सब चूर-चूर हो जाते हैं। यदि कृष्ण भक्ति है भगवान, यदि कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति बलवान है, मतलब हम लोग साधन करते हैं, भक्ति बलवान है, तो विधि मतलब विधि मतलब नेचर का जो विधान है वो भी कट जाता है, वो भी कट जाता है। ताली बजाने से क्या होता है? ये लकीरें भी हिल जाती हैं, नेगेटिव खत्म हो जाता है और पॉजिटिव बढ़ता है। जस्ट लाइक फॉर इंफॉर्मेशन, आजकल फोन का डिजिटल जमाना है ना। सुबह, अच्छा मैं पूछूंगा नहीं इस कंपैरिजन, लेकिन सुबह बाथरूम में जब जाते हैं सब लोग, तब भी फोन पर ईमेल्स चेक कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे होते हैं। और उससे पता क्या होता है? हमारे जो स्टार्स है ना, ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, याद रखना। हमारे जो स्टार्स है उसमें जो मरकरी है
वो खराब हो जाता है। और जब मरकरी खराब होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही थी वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। बाथरूम में हर चीज का एक विधान है, खाने का, स्नान करने का और टॉयलेट में जाने का, तो वो एक अलग अलग कौन एक सेक्शन है। तो वहां पर अगर कोई फोन पर ऐसा कुछ टाइम स्पेंड करता है तो मरकरी उससे खराब होता है। तो बी केयरफुल, दिन में जो मर्जी करो लेकिन स्नान करते समय तो कोई फोन स्क्रॉल नहीं करता, क्यों? गीला हो जाएगा। उस समय अगर कोई 7 बार गंगा 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 बोलते हैं तो सच में गंगा जी के स्नान का फल मिलता है। 7 बार स्नान करते समय। और भी अच्छा है अगर महामंत्र का जाप करते करते तो स्नान करें, तो शरीर भी पवित्र, मन भी पवित्र, सब कुछ पवित्र। लेकिन उस समय भी कुछ सुनते हैं यहाँ पे टेंशन में रहते हैं। At least that moment is very auspicious if we just chant the name of Krishna and take a shower. So before I begin to say anything, I will request Subha Prabhu, Siddharth Prabhu, to please take the mic and speak few words, then I will take over. Thank you, Maharaj. I take this opportunity to सौभाग्य की जो डेफिनेशन दी गई है वो कहा गया है कि अगर ये कहा जाए कि साधु संग आपको मिला है तो उसको हम कह सकते हैं सौभाग्य। अभी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया जी। महाराज एक्सप्लेन टू एन एग्जांपल that it's a special significance as to what is done at what point in time in what place. So but as far as Harikatha goes, sadhu sang goes, that transcends all these rules and regulations. If we are able to do that, that is the sure short sign of our good fortune. So we are very very fortunate. I understand that when the invitation is being sent, some people are able to make it. Some people say, okay, we will come. Some people will come, but they will probably not pay heed to the katha. However, everyone will be benefited. So, but it's just the degree of benefit that will vary. Because we are running a little late, before I go any further, I'll invite Bhavna Didi. She wants to welcome Bhaktivedanta Siddhanti Maharaji, because last time when Maharaji came, Anjali Didi and Ashu Prabhu very kindly arranged a very elaborate program, and we had such a good connection. When Maharaj left, everyone was thinking, why is he going? He should stay more. This time we couldn't do that. It's a very short visit, but we are requesting him that next time when he comes to Toowoomba, hopefully we can give some more time and do proper arrangement for him to stay here for longer. So Bhavna Didi was one of those few lucky souls who were able to get a very good connection with Maharaji. So if I can invite Bhavna Didi to come and say a few words on behalf of herself and Alokji as well, who is not here at the minute. Hare Krishna, everybody. Today is a very auspicious day that we all have gathered together here. So welcome Sripad Bhaktivedanta Siddhanti Maharaja, who has come all the way from India, traveled to different countries. And it's a very blissful day for all of us to be here and to be surrounded by you all the last day. I would like to say a few words about him. So Sripad Bhaktivedanta Siddhanti Maharaja, he was born on 15th November 1972 in India, in a very wealthy family where his parents and his grandparents, they worshipped Gopalji for a long, long time. And he himself was very much inspired, and he was dedicated himself to the celibate life in the service of his spiritual master for the last 25 years. He has done a very special seva service unto the lotus feet of his initiating and spiritual masters, Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, and Srimad Bhakti Vishnana Bharati Goswami Maharaj. So he is very learned in his
scriptures, Maharaj was instructed by his spiritual masters to preach about this rare jewel of Vedic knowledge everywhere across the globe. He is given the sannyasa order, the life of renunciation, and now he is traveling all over the world to inspire people like us on the path of Bhakti Yoga. Loving devotional service to Bhagavan, we call as God. He is an established orator of Srimad Bhagavad Gita and has spoken more than 150 Bhagavad Sattas in the last 13 years. He preaches all across the globe, covering more than 30 countries, and astonishes everyone with his divine words of wisdom and deep spiritual insights. So let us all welcome to him and be benefited in different ways. महाराज जी ने जो सुंदर उद्गार दिए, भावना दीदी ने जितना सुंदर परिचय दिया है महाराज जी का, एक छोटी सी बात याद आ गई। 2 मिनट की एक खड़ी कथा महाराज कि आप सब लोगों ने प्रहलाद महाराज की कथा तो सुनी होगी। तो प्रहलाद महाराज जो थे वो उनको इतनी भक्ति कहाँ से आई? साधु संघ की बात हो रही थी तो प्रहलाद महाराज को भक्ति आई नारद जी की कृपा से, क्योंकि जब नारद जी आए तो नारद जी ने प्रहलाद महाराज को भक्ति दी। नारद जी ने प्रहलाद महाराज को अपनी मैया के गर्भ में ही वो भक्ति प्रदान कर दी थी, जिससे प्रहलाद महाराज अपनी भक्ति में दृढ़ हो पाए। तो अभी महाराज ने बताया कि जैसे ही हम नाम लेते हैं भगवान का तो भगवान आ जाते हैं, लेकिन हमें क्यों दिखाई नहीं देते? क्यों? क्योंकि हमारी भक्ति अभी जो है वो बहुत छोटी है, बहुत वीक है। लेकिन साधु संघ क्या करता है? गुरु का आशीर्वाद क्या करता है? गुरु का पदाश्रय हमारे लिए क्या करता है? वो शक्ति देता है हमारी भक्ति में। जब भक्ति में शक्ति आती है तो फिर भगवान क्या करते हैं? प्रहलाद महाराज इसका एक एग्जाम्पल है। जब हिरण्यकश्यपु अपने महल में प्रहलाद महाराज को प्रताड़नाएं दे रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम मेरे से डरते क्यों नहीं हो? तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं तुमसे क्यों डरूं? मैं आई एम नॉट अफ्रेड। तो हिरण्यकश्यपु उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आती है? तो वे कहते हैं जिनसे आपको शक्ति आती है वही श्री विष्णु श्री हरि मुझे भी शक्ति देते हैं। तो पूछते हैं कि कहां है तेरा हरि? तो अब जो नरसिंह भगवान है वो एकदम अलर्ट हो गए। मान लीजिए कि ये जो हॉल है ये हिरण्यकश्यपु का पैलेस है, एक बहुत बड़ा चैम्बर है, उसमें वो पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज से कि कहां है तुम्हारा हरि? अब हिरण्यकश्यपु जो है वो तैयार हो गए, उनको पता है कि भाई आज जो है प्रहलाद महाराज पे अटैक हो सकता है, तो आई हैव टू कम एंड से द डिवोटी। तो अब वो एंट्री नहीं कर सकते जब तक भक्त उनको ना बुलाए। तो इससे पता चलता है कि भगवान स्वयं जो है वो भक्त के पराधीन है। तो हिरण्यकश्यपु उस कोने में जाता है, कहता है यहाँ है तुम्हारे भगवान। तो जो आप इस बड़ी हॉल है, तो हिरण्यकश्यपु जो है आप इमेजिन कीजिए कि अंदर डक से भाग के जाते हैं, वहां हो जाते हैं कि अगर प्रहलाद महाराज ने हाँ बोली तो मैं यहाँ से निकल के आऊंगा। तो फिर अब हिरण्यकश्यपु कहते हैं तो वहां है, तो भगवान भाग के वहां जाते हैं कि अगर यहाँ प्रहलाद ने हाँ बोली तो मुझे यहाँ से निकलना है। तो भगवान भाग रहे हैं अपने भक्त के इशारे पे कि जहां मेरा भक्त कहेगा मैं वहीं से प्रकट हो जाऊंगा। तो अंत में हिरण्यकश्यपु ने एक जो खंबा था, स्तंभ था, उसको छोड़ दिया और कहा कि यहाँ है तेरे भगवान। तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ यहाँ है मेरे भगवान, यू नो। और हिरण्यकश्यपु सॉरी भगवान श्री नरसिंह ने उस स्तंभ को फाड़ के उसमें से प्रकट हो गए। तो देखिए ये जो है ये भक्त की शक्ति है। जब हम ऐसी ऐसी कथाएं सुनते हैं तो उससे हमारा हृदय मार्जन होता है। हृदय मार्जन होता है तो आत्म परिचय होता है। आत्म परिचय होता है तो हमें समझ में आता है कि हम कौन है और परमात्मा कौन है। महाराज 20-21 साल के थे जब वो अपने गुरु जी के पराशर में ग्रहण किया भक्ति प्रमोद गोस्वामी जी महाराज जी सच्चे भाई महाभागवत। तो उसके बाद उनका इतना सेवा की महाराज ने, उसका फल ये मिला कि जब महाराज जी यहाँ से उनका अंतर्धान हुए तो गुरु जी के पराशर महाराज जी को मिला। और उसके बाद अनंतर महाभागवत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी जी महाराज। तो इससे पता चलता है कि जो साधु है वो आप कभी छोड़ते नहीं है, आपका हाथ पकड़ के आते, साधु के हाथ में पकड़ाते हैं। ये है भक्ति की शक्ति। 20-21 साल का मैं सोचता था कैसे बनाऊंगा, है ना। और महाराज जी सोच रहे हैं कि जीवन कैसे सफल करेंगे। तो ऐसे जीवन उदाहरण जब हमारे साथ आते हैं हमें बताते हैं कि यस पॉसिबल है ना। अपने उदाहरण के द्वारा तो हमें उसका भरपूर फल उठाना चाहिए, हमें वो भाव ग्रहण करना चाहिए और सोचना चाहिए
कि महाराज को कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे सब जगह जाने की. So many times I see he's traveling so fast. He's jet lagged. He hardly gets a time to relax. Even straighten his back, but he's still doing it. Why? For us. So if we are here, we must take good benefit of his instructions and try and take them to our heart and pray to God that we are able to make our life successful. And how would that happen? As of today, that would happen by hearing Harikatha coming from the lotus lips of Srila Maharaj himself after Purna ceremony. We're getting our heart treated by the doctor routine. They're also the doctors. क्योंकि हम लोग अपनी पहचान खो बैठे हैं ना, हम लोग सोचते हैं हम शरीर हैं. तो मैं ये नहीं कह रही कि जो मतलब हमारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे शरीर को देखते हैं, चिकित्सक हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो है ही है जगह. मगर हम एग्जैक्टली कौन है, वो है हम आत्मा जो भूल चुके हैं कि हम कौन हैं ना. वी आर डिसआइडेंटिफाइंग एवरीथिंग. तो उनके डॉक्टर्स कौन है? जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी याददाश्त खो चुकी है कि हम कौन है, वो कौन याद दिलाएगा? तो वो गुरुवर ही याद दिला सकता है. एक ऐसा गुरुवर जो उस जगत से आया है और उन्हीं के धारा को फॉलो करते हुए हमारे श्री भक्ति शांति सर महाराज जी आए हैं, है ना. अपना भजन छोड़ के ही ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे हमारे सन्यासी महाराज जाते हैं, वैसे ये भी सब जगह जा रहे हैं और लोगों को, जीवों को याद दिलाने के लिए कि वे कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है. ये जीवन, ये जगह है जहाँ पे हम खुशियां बनाने लगे हुए हैं, मन को रिझाने लगे हुए हैं. ये दुखालय है. ये जगत क्या है? ये अशाश्वत है. तो यहाँ पे अपने मन को ना बसाओ. तो ये हमको याद दिलाने आए हैं, हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म करने आए हैं. तो इससे ज्यादा हमारा कितना बड़ा मतलब सौभाग्य है कि महाराज जी यहाँ टूवुम्बा में आए हैं हम सबको, हमारे हृदय को बदलने के लिए. तो हम इनके बहुत आभारी हैं. जय गुरु, जय विष्णु. Ji, now if all of us can invite. जी सब अपने अपने फोन साइलेंट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए जी, और पूरा ध्यान यहाँ लगाइए जी. If I can introduce Naveen Krishna Brahmachari Prabhuji to all of us. He is traveling with Maharaj, providing full seva. 2 minutes. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Sadadaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, offering my Dandavat Pranams unto my Gurudev on mission part, as also to Shri Srimati Bhaktivedanta Siddhanta Maharaj, and to the entire Rupa Guru Varga, and to Shri Chaitanya Mahaprabhu and all of his associates, and unto Shri Shri Radha Madhav, and also unto all of their divine associates. And my Dandavat pranams to all the devotees present. Hare Krishna. So, we have gathered today for what purpose? We have all developed, or trying to develop, this higher taste. We see that the things of this material world do not satisfy us. And when we come in contact with this Krishna consciousness, we see that there is something else that we do not normally have, and that we want, and that we desire. Real happiness, real purpose. And slowly, being in this Sangha, we start to see and realize that the love of this material world is not actually really fulfilling us.
And the little bit that we get, the little bit that we understand, and the little bit that we receive by the mercy of the Vaishnavas, the sadhus who come here, we can start to see that actually this is the real substance. So many people of this material world, they are satisfied or think they are satisfied with these temporary things. We look at the example of Hiranyakashipu. So Hiranyakashipu and Hiranyaksha, very powerful demons, and we all know the story of Lord Maharaj, right? So Hiranyakashipu, he was such a great demon. He performed so much tapasya, and he got so many boons from Lord Brahma. I'm sure we all know the pastime. And he conquered so much. He conquered all the world, and everyone was so scared of him. But even though he had conquered all of these things, and he had so much opulence around him, he even managed to tie and bring down into his palace all of the planets, so that they would sit according to where it would be beneficial for him. So imagine that power and that opulence. But still, it says in Srimad Bhagavatam that even though all of these things he had, he still could not control his mind. He could still not control his desires. So no matter what we have in this world, no matter how much opulence we have, still our mind will go here and there. Bhagavad Bhakti Hinasya Jati Shastram Japat Apaha Apranasya Dehasya Mandalam Lokaranjanam. That all of these endeavors are temporary. All of these endeavors are temporary. And it's like this example, this verse is saying that there is a dead body. And no matter how many ornaments and beautiful things we put on this dead body, still it is a dead body. No matter how much we beautify, how much makeup we put on, still it is a dead body. So like this, all of these things are temporary. And we decorate our body with all of these temporary things. But we think they are the real thing. We think that they are giving us real happiness. But these things aren't giving us real happiness. So what does give us real happiness? Smaram Bangi Triparichipam, Sachi Vistina Drishtin, Vamshinyastadara Kashalyam, Ujvalam Chandrikena, Govindakyam, Haritonam Etaha, Keshi Kirtopankante, Ma Prachishtas, Twa Yadi, Saki Bandu Sangas Niti Rangaha. It's a very beautiful verse. It's saying that if you are attached to your friends, if you are attached to your worldly things, your worldly possessions, don't go to Vrindavan. Don't go to the bank of Keshigat. Don't go there, because who is there? Is Lord Govinda. Lord Govinda is there, and he's standing there, with his beautiful smile. Ujvalam Chandrikena, and he is very, very bright like the moon. So beautiful, like 1,000 moons. And his beautiful smile, and his threefold bending form. We've all seen Lord Govinda, so beautiful, so attractive. And his beautiful flute that he has on his lips. So don't go if you are attached to your material things. Don't go, because he will steal your mind. This is what Hari means, one who steals the mind. He will steal your mind with what? Love and devotion. He will attract you. And this is what this Krishna consciousness does. Is it slowly bringing you to a higher level of taste. Vishaya vinivartate liraharasya veginam rasovaja rasopyasyam param drishna nivartate. Param drishna nivartate. That this Krishna consciousness, it gives us a higher taste. It gives us a higher taste. And this higher taste is the real purpose of life. This is the real purpose of us having this human body. This human body, we have been given this human body for a purpose. It's not to enjoy these material things. The goal of life is not to get a good job. The goal of life is not to have a nice family. These things, yes, if we use them in Krishna service, yes, of course. But the goal of life is to develop this loving devotion. And being in this sadhu sangha, hearing from Gurudev, this is what will happen. Is slowly our consciousness is developing. Slowly our consciousness is changing. So we can be fully attracted, fully absorbed in that Krishna consciousness. The Krishna consciousness. So, slowly. And this is why we try and do regular programs. And slowly this will elevate us to a stage where we feel real happiness, real purpose. Hare Krishna.
Vanchakalpatarubhishcha Kripasindudevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Everybody, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.